अगर आपको टोन एंड वर्सेटिलिटी चाहिए ऑफ द आइकॉनिक JCM 800 बट यू वांट इट इन अ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल एम्पलीफायर, तो इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। हम सभी गिटार प्लेयर्स को वो क्लासिक मार्शल JCM 800 टोन चाहिए, लेकिन we can't really carry a head and a 4x12 cabinet around. And that is where Marshall's Studio Classic SC20C comes in really handy, क्योंकि इसके थ्रू आपको वो एकदम वो lush dynamics and that hard hitting distortion मिलने वाला है, जो आपको एक head and combo में मिलता है, but in a very very portable size. Hi guys, it's me Adit Kundra from Adit's Guitar Lessons. आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मार्शल के Studio Classic SC20C का। बट बिफोर वी गेट टू द रिव्यू वीडियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे गिटार सीखना चाहते हैं या म्यूजिक थ्योरी एंड कॉम्पोजिशन, देन डू चेक आउट माई अकेडमी एंड माई कोर्सेज म्यूजिक एज अकेडमी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मार्शल का ब्रांड नेम तो सभी जानते हैं, इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक गिटार्स। ये कंपनी कुछ 1960s में स्टार्ट हुई थी एंड यू नो थ्रू द ईयर्स वी हैड लेजेंड्स लाइक एरिक क्लैप्टन, जिमी हेंड्रिक्स, स्लेयर, गन्स एंड रोजेज, AC/DC। ऐसे म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं जो मार्शल एम्पलीफिकेशन यूज़ करते थे। इनफैक्ट टू दिस डे मार्शल के जो स्टैक्स होते हैं, विच इज़ द हेड एंड द कैब कॉम्बो, इज स्टिल सिनोनिमस विद द पावर एंड एनर्जी ऑफ द रॉक म्यूजिक जॉनर। So हमारा Studio Classic SC20C is actually made in the same factory as the JCM 800, and it's got a very clean classic design. So it's basically a single channel tube amplifier which is driven by two ECC 83 preamp valves, and इसमें एक 10-inch का Celestion speaker है। So जो SC20C amp है, this might look a little intimidating to some people, लेकिन trust me on this one, it's got a very very clean and simple design, and that's something which I really like about this. And इसमें इतनी सारी टोन्स मिल सकती हैं कि इट्स जस्ट अमेजिंग। तो you can actually get that really warm, clean tone as well as that really gritty Marshall crunch as well, thanks to the sensitivity input. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो इनपुट्स हैं हमारे। So अभी ऊपर वाला जो है that is the high sensitivity input, and high sensitivity input में आपको you get that gritty Marshall crunch, and जो low sensitivity input है उस पर अगर मैं कर दूंगा then you will get a more clean and restrained tone, right? So that's your high sensitivity। लेकिन अगर मैं इसको लो पे डाल देता हूँ, right, so I need to increase the volume now, so my master, right, so that is your low sensitivity, and but of course Marshall तो high पे ही होता है। So let me just play the same, ow, right, so इसकी volume मुझे कम करनी पड़ेगी, but you get it, right? So there is basically two inputs, and उसके through you will get a totally different tone. Now let's talk about the front panel of the Studio Classic SC20C. तो जैसे मैंने आपको बताया था, extreme left में we have the input, the sensitivity input. So there is the low and the high sensitivity input. उसके right में we have the preamp gain knob. उसके right में we have the master volume. Again, master volume is something which made the JCM 800s so very famous. So you get the master volume in the SC20C, which is a great feature. उसके right में we have the 3-band equalizer, so you can actually shape your tone through that. So there's bass, there's mids, and there's treble. उसके right में there is the presence control, so you can actually shape your tones further. And इसके right में जो switch है, this one,
That is extremely important. तो हमारा Studio Classic SC20C is basically a 20 watt tube amp combo. And अगर मान लीजिए आप gigs में हैं, अगर मान लीजिए you're playing in a stadium or even an arena, then you can actually use this tube amp. लेकिन अगर मान लीजिए you are playing in a bedroom और या आप apartments में play कर रहे हैं and you don't really want to disturb everybody but you still want to crank up your tubes, then आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लो इनपुट में जा सकते हैं. सो लो पे बेसिकली क्या होता है, इवन विदाउट द नीड ऑफ एन अटेनुएटर आपका जो आउटपुट है दैट इज गोइंग टू ड्रॉप फ्रॉम 20 watts to 5 watts, राइट. सो यू विल स्टिल गेट दैट, यू विल स्टिल बी एबल टू क्रैंक अप द वॉल्यूम ऑफ योर एम्पलीफायर, यू विल स्टिल बी एबल टू गेट दोज रियली नाइस ट्यूब एम्प ब्रोकन टोन्स without really having a very high output. So just to give you a demonstration, मेरा अभी जो गिटार का आउटपुट है that is at 20 watts. And अगर मेरे को लगता है ये बहुत loud है, so I can just drop it to 5 watts. Studio Classic SC20C के अगर हम बैक पैनल पे जाएंगे, so there is an input for effects loop as well, so that you can actually add more variety to your tones. And अगर मान लीजिए आपको और भी ज़्यादा sound चाहिए, let's say you're probably gigging in a big space, then हमारे SC20C के बैक में there is also the provision to add some external speakers and use this particular tube amp as a stack. So इसके बैक में we have the ability to add 4 more external speakers. So जो tube amps होते हैं, they have this beautiful analog tone. जो हमारे ये डिजिटल मॉडलर्स वगैरह होते हैं, मॉडलिंग एम्प्स होते हैं, these I don't really think they can actually replicate. But the only drawback with tube amps is the fact कि इनका वेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. So they are really heavy and अगर मान लीजिए आप ट्रैवलिंग म्यूजिशियन हैं, अगर आप गिग्स वगैरह पे जाते हैं, then carrying a tube amp is not really that easy, right? इसके लिए आप देखेंगे कि जो हमारे गिटार प्लेयर्स होते हैं, इनके क्रू मेंबर्स होते हैं जो लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं एम्प्स की. लेकिन दैट इज़ वेयर द SC20C इज़ अ रियल स्टैंड आउट, क्योंकि इसका जो टोटल वेट है, डिस्पाइट द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एंड हैवी ट्रांसफॉर्मर्स एंड दैट ब्यूटिफुल एनालॉग टोन, इसका वेट इज़ ओनली 15 kgs, राइट. सो यू गेटिंग वंस अगेन यू गेटिंग दैट आइकॉनिक JCM टोन इन अ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल ट्यूब एम्प कॉम्बो. जो अच्छे ट्यूब एम्प्स होते हैं उसमें मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एंड दैट इज़ द फैक्ट कि अगर मान लीजिए मैं हाई गेन में प्ले कर रहा हूँ, सो राइट नाउ मेरा जो गेन है दैट इज़ एट लेवल 9. सो लेट्स गिव इट अ लिसन. राइट, अब अगर मान लीजिए मेरे को लो गेन में प्ले करना है, देन आई ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू ड्रॉप द गेन थ्रू द गेन नॉब ऑन द एम्प. लेकिन मैं चाहूँ तो अपने गिटार के थ्रू ही, अगर मान लीजिए मैं अपनी वॉल्यूम को ड्रॉप कर दूँ, आई कैन गेट द सेम इफेक्ट, राइट, वर्सेस ओके. सो अब मैं आंसर करने वाला हूँ 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो पहला तो हमारे SC20C का प्राइस क्या है एंड हु इज दिस फॉर. सो हमारा ब्यूटीफुल वाइट स्टूडियो क्लासिक SC20C का MRP इज़ 1.2 लाख रुपीज़. लेकिन अगर आप इसका बेस्ट प्राइस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो म्यूजिक एज अकेडमी के शॉप पेज का लिंक है उसको डेफिनेटली चेक करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्शल की इंटायर रेंज मिल जाएगी एट रियली अट्रैक्टिव प्राइसेस. एंड द कूल थिंग इज़ दैट कि सारा का सारा जो स्टॉक होता है दैट इज़ एक्चुअली शिप्ड directly by the official Marshall India distributor. Okay, so who is this for? Of course, at a price tag of 1.2 lakhs, it is for the serious musicians only. Lekin remember, you're getting that iconic JCM 800 tone in a very, very compact size tube amplifier. And जैसे मैंने बताया था, you can actually drop from the output of 20 watts to 5 watts without an attenuator.
तो इसके साथ आप अगर मान लीजिए गिगिंग करना चाहते हैं, आप गिगिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टेडियम्स में प्ले करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द SC20C एज अ स्टैक and add some external speakers. अगर आप घर में play करना चाहते हैं then you can just drop the wattage from 20 watts to 5 watts and still get that iconic JCM 800 tone at a reduced output, right? So I would say कि if you're a serious musician and you really want that iconic Marshall tone, then definitely go for the Studio Classic SC20C. ठीक है, so that was my review of Marshall's Studio Classic SC20C. I really hope you enjoyed the review video. And अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसको definitely Music Edge Academy के शॉप पेज में जरूर देखिएगा. The link is in the description box. And अगर आप मुझसे गिटार सीखना चाहते हैं या म्यूजिक थ्योरी and composition, then check out my courses and my academy, Music Edge Academy. Link is also in the description box. This is Adit signing off. I'll see you guys in the next video. Take care.